We start with the first chapter of economic science. Yes, introduction to micro and macroeconomic students. Yes, everybody. Now, your entire syllabus of SYGC economics is totally, I can say, yes, totally you have 10 chapters, I can say. And out of the 10 chapters, your first 5 chapters, to be specific, your first 6 chapters, because 3 is divided into 3A and 3B students, I can say. So 1, 2, 3A, 3B, 4 and 5. These are chapters of microeconomic science. And right from chapter number 6, yes everybody, we have the chapters of macroeconomic science. To be specific, 6 is once again I can say a chapter of statistics. So 7, 8, 9 and 10 basically are chapters of macroeconomics. Yes everybody. Now I would like to first of all tell what is micro and what is macroeconomics. The terms of micro and macroeconomics were originated by Professor Ragnar Frisch. The terms of micro and macroeconomics, I can say, were basically originated by Professor Ragnar Frisch in 1933 students, I can say. He basically belongs from a Oslo University students, I can say. Is it clear, everybody? So the terms of micro and macro were originated, yes, I can say, by Professor Ragnar Frisch in the year 1933 students. Yes, everybody? लेकिन क्या होता है माइक्रो और क्या होता है मैक्रो, ये अभी आपको बेसिकली समझना है. हमने एक छोटे बच्चे से पूछा कि बेटा माइक्रो और मैक्रो ये वर्ड में क्या फर्क है, तो उसने बहुत हमको क्यूट सा आंसर दिया. क्या बोला? सर माइक्रो में आई है और मैक्रो में ए. मैंने बोला एकदम परफेक्ट. माइक्रो में आई है और मैक्रो में ए, ये एक लेटर ने पूरे सब्जेक्ट का स्कोप चेंज कर दिया. यस एवरीबॉडी. माइक्रो में आई है, आई मतलब इंडिविजुअल. माइक्रो में आई मतलब इंडिविजुअल और इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल. यस एवरीबॉडी. वन. यस एवरीबॉडी. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद द इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच. यस एवरीबॉडी. इट इज कंसर्न विद वन थिंग स्टूडेंट्स, आई कैन से. यस, व्हेयरएज मैक्रो में ए है, तो ए मतलब क्या? यस, इट इज कंसर्न विद द एग्रीगेटिव अप्रोच. एग्रीगेटिव मतलब कि टोटल. यस एवरीबॉडी. मैं आप लोग को एक दो एग्जांपल दूंगा दोनों के कंपैरिजन के. If microeconomics is concerned with personal income, macroeconomics is concerned with national income. Income of one person is, I can say, what? Personal income. That becomes, I can say, microeconomics. But the income of the entire nation is total income, students. हम उसको basically क्या बोलते हैं students? It's a macroeconomics. Yes, everybody. If I ask you, what is the price of a commodity, or what is the price of one commodity, it becomes the concept of microeconomics, I can say. But if I ask you what is the general price level in the country, तो उसको हम लोग basically क्या बोलते हैं? It is said to be macroeconomic science. Is it clear, everybody? So micros, yes, I can say microeconomics is basically concerned with the individualistic approach. Yes, everybody. Whereas the macro are studies about the aggregative approach. Is it clear, everybody? हम और comparison कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल we basically concentrate on the first part, students, microeconomic science. Yes, everybody. As far as microeconomics is concerned, आपको पता है ये माइक्रो मतलब क्या? The word micro has been derived from the Greek word micros, और micros का मतलब होता है small. Yes, everybody. The word micro has been derived from the Greek word micros, I can say. It means small. और जैसे मैंने आप लोग को बोला बेटा, it studies about the individualistic approach, I can say. Is it clear, everybody? As far as microeconomics is concerned, if I go to the historical review, students, of microeconomics, it's very interesting, students. Yes, everybody. Microeconomics was actually originated by father of economics, I can say, Sir Adam Smith. Microeconomics was actually originated by father of economics, I can say, Sir Adam Smith, in his book Wealth of Nation, published in the year 1776, I can say. Yes, everybody. It was originated by father of economics, I can say, Sir Adam Smith, in his book Wealth of Nation, published in the year 1776, I can say. लेकिन एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ, although it was originated by Sir Adam Smith, I can say, microeconomics was developed. Microeconomics was popularized by Professor Alfred Marshall. It was popularized by Dr. Alfred Marshall. He wrote a book, Principles of Economics, I can say, published in the year 1890.
इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो कृष्ण भगवान जैसा है। उसको पैदा किसी और ने किया और पाला किसी और ने। उसको पैदा किया एडम स्मिथ ने, लेकिन उसको पाला किसने, उसको डेवलप किसने किया? यस, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। और इसीलिए हमेशा हम ये कहावत बोलते हैं कि पैदा करने से ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है। आज जब दुनिया में माइक्रो इकोनॉमिक्स यस याद किया जाता है तो लोग सबसे ज्यादा किसको याद करते हैं? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल को। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? मालूम पड़ा सब लोग को बेटा? यस सर। ऑफ कोर्स बहुत सारे दूसरे इकोनॉमिक्स भी हैं। वी हैव प्रोफेसर डेविड ह्यूम, आई कैन से, और वी हैव यस प्रोफेसर डेविड रिकार्डो, वी हैव प्रोफेसर जे.एस. मिल। ये सब लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का सपोर्ट किया। जब वो लोग भी अपनी थ्योरीज लिखते थे, even they have, I can say, used the concepts of microeconomics, I can say. Yes, everybody, but two big names. It was originated by Sir Adam Smith, I can say, but it was developed and popularized by Professor Alfred Marshall. Is this concept clear, everybody? Yes, मालूम पड़ा सब लोग को। बहुत सारे दूसरे इकोनॉमिस्ट भी है, प्रोफेसर पिगू है, प्रोफेसर टिक्स है, प्रोफेसर सैमुअलसन है, प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन है। They all have also contributed to the development of microeconomic science. Is it clear, everybody? All right, wonderful. Guys, what is the definition of micro? We have a very one simple definition of microeconomics given by Professor Morris Dobb. What he says, I can say. He says that microeconomics is basically microscopic study of an economy. What is microscopic? Microscopic का मतलब क्या? Yes, something I can say is called something small but something in detail. Yes, everybody, it's something small but something in detail, students, I can say. So microeconomics, according to Professor Morris Dobb, is said to be the microscopic study of an economy. At least ये definition तो आपके पेपर में आपको लिखना ही है, ठीक है? दूसरा जो डेफिनेशन आपकी बुक्स में दिया है इज गिवन बाय प्रोफेसर अपापी लर्नर। ये डेफिनेशन थोड़ा बड़ा है, ये सेगमेंट थोड़ा डिफिकल्ट है, तो कम से कम मैं स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो मॉरिस डॉब का डेफिनेशन विद द नेम ऑफ एन एक्सपर्ट, आई कैन से डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे। यानी कि लेकिन अब्बा लर्नर, एपी लर्नर का डेफिनेशन भले हम लोग बाय हार्ट ना करें, लेकिन हम लोग डेफिनेटली वो वर्डिंग्स है, यस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज इंटेंशन, आई कैन से। यस एवरीवन, तो आप देख सकते हो वहां भी microeconomics consists of looking at the economy through a microscope. Same, we look at the economy from a microscope, I can say, as it were, to see how the millions of cells in the body of economy, जैसे हमारे बॉडी में millions of cells हैं, okay? तो ऐसे इकोनॉमी जो होता है, एक कंट्री होता है, it is made of so many small things, I can say. Yes, everybody, the individuals, the households, the consumers, the individuals of the firms and the producers play their part in the working of the whole economic organism. I follow everybody, but अब जो पूरा एक देश बनता है वो कोई एक आदमी से नहीं बनता है. So many individuals, so many producers, so many organizations contribute together and they form the entire organism, students, I can say. Yes, everybody, this is said to be the definition, very brief, I can say, of Professor Apapi Lerner students. Is it clear, everybody? तो इसको basically हम लोग क्या बोलते हैं? Microeconomics. Is it clear, everybody? आपको मैंने पहले भी बोला, we have certain examples of microeconomics, I can say. Microeconomics studies about personal income. Yes, okay, it studies about individual demand. It studies about individual supply. It studies about price of a particular commodity. It studies about personal consumption. It studies about personal saving. Yes, so these are all said to be the concepts of microeconomics, I can say. Is it clear, everybody? Now we take the first answer of this particular chapter. And what is this answer about? The answer is about the content or scope of microeconomics, I can say. यानी कि microeconomics के अंदर क्या-क्या included है? Yes, everybody? आप देख सकते हो यहाँ चार्ट मैंने बनाया है आपके लिए. Microeconomics have three important branches. Number one, theory of value. It is also said to be the product pricing. And number two, theory of factor pricing. And number three is said to be theory of economic welfare. Is it clear, everybody? We'll take one by one, students. हम सबसे पहले we concentrate on the first branch. Yes, it is said to be theory of value. हम उसको बोलते हैं product pricing. और प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फर्स्ट ब्रांच, वो होता है थियोरी ऑफ डिमांड. यस एवरीबॉडी, अभी हम जब थियोरी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, गाइस डिमांड करता कौन है? कंज्यूमर्स करते हैं. थियोरी ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड करता कौन है? कंज्यूमर्स करते हैं. तो थियोरी ऑफ डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं? इट स्टडीज अबाउट द कंज्यूमर्स बिहेवियर.
It studies about the consumer behavior. Since demand is done by a consumer, the entire analysis of theory of demand हम उसको बोलते हैं क्या students consumer behavior. Is it clear everybody? Second होता है theory of production and cost I can say. Yes everybody. अच्छा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट यानी कि प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर. तो ये पूरा जो एनालिसिस है ऑफ थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आई कैन से हम उसको बेसिकली बोलते हैं प्रोड्यूसर्स बिहेवियर. आई फॉलोइंग एवरीबॉडी? सो थियोरी ऑफ डिमांड इट बेसिकली concentrates on the analysis of the consumer behavior. The theory of production and cost I can say it basically concentrates on the on the producer's behavior. Is it clear everybody? थर्ड वाला कौन सा है? थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. अभी प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या है? आपको ये सब आप लोगों को पढ़ना है. थियोरी ऑफ डिमांड मतलब क्या है? आप लोगों का चैप्टर नंबर 3A एंड 3B. थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आपको थोड़ा 12th में पढ़ा है, थोड़ा आपको डिग्री कॉलेज में पढ़ना है. वो है आपका चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट्स आई कैन से सप्लाई एनालिसिस. थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग ये आप लोग को पढ़ना है इन द बेसिकली 5th चैप्टर, और ये भी डिग्री में आपको डिटेल में पढ़ना है. प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या है? हाउ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिसाइडेड. How the price of the commodities are fixed I can say in the different markets. आप लोग जब आओगे तब आप लोग को चैप्टर में पता चलेगा इकोनॉमिक्स में अलग-अलग प्रकार की मार्केट्स होती है. जैसे हम OCA में बोलते हैं ना होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, दिस ऐसा इकोनॉमिक्स में नहीं होता. In economics we have different forms of market. We have the monopoly market, we have the perfect competitive market, we have a monopolistic competition market, we have a oligopoly market. नाम से डरना मत, ठीक है? ये सब आप लोग को आने वाला है, ठीक है? इस सभी मार्केट्स में प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसे डिटरमाइन होता है, हाउ द प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन डिफरेंट मार्केट्स, ये आप लोग को बेसिकली अंडरस्टैंड करना है. आई फॉलोइंग एवरीबॉडी? सो 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस अंडर द फर्स्ट ब्रांच थियोरी ऑफ वैल्यू. तो फटाफट से हम उसका क्विक रिकैप करते हैं. Theory of demand, it concentrates on the analysis of the consumer behavior. Theory of production and cost, it concentrates on the analysis of the producer behavior. And third is theory of product pricing. I can say here we basically decide, or yes, we try to understand how the price of the commodity are determined, I can say, under different market structures. Is it clear everybody? All right, wonderful. Second वाला तो हम सबको पता है, theory of factor pricing. Yes everybody? We all know, yes, I can say we have how many factors of production? We have 4 important factors of production: land, labor, capital, organization. Yes, everybody? And what do we pay to them in return? What do we pay them as their remuneration? What price do we pay? Land is given rent, labor is paid wages, capital is paid interest, and organization or an enterprise earns profit, I can say. Are you following everybody? So yes, in microeconomics, we also focus on the factor pricing: rent, wages, interest, and profit. जैसे मैंने आपको बोला, land is paid rent. Yes, I can say labor is paid wages. Capital gets interest, I can say, and an organization or an enterprise basically enjoys the profit. Are you following everybody? So the theory of distribution deals with the factor pricing, students, and it deals about the factors of production: land, labor, capital, and organization. Is it clear everybody? सब लोग को समझ में आ रहा है बेटा? Yes sir. थर्ड जो लास्ट ब्रांच है वो है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. नाम से पता चलता है इट टॉक्स अबाउट द वेलफेयर स्टूडेंट सर्विस. Yes everybody? और हम जब थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं सो वी बेसिकली टॉक अबाउट द हाउ इंडिविजुअल कैन मैक्सिमाइज द वेलफेयर. Yes everybody? We talk about the welfare of an individual students I can say. तो यहाँ बेसिकली वही लिखा है कि how an individual consumer can maximize his satisfaction. See, consumer के लिए main aim क्या होता है? To get maximum satisfaction. और producer के लिए main aim क्या होता है? To earn maximum profit, students I can say. लेकिन producer maximum profit कब कमा पाएगा? When a producer is able to produce, I can say, maximum amount of output with the minimum amount of resources, I can say. So that is only possible when the producer is able to produce maximum output with a limited set of input, I can say. Is it clear? तो हम जब theory of economic welfare की बात करते हैं तो हम consumer के point of view से भी सोचते हैं, हम producer के point of view से सोचते हैं कि consumer का welfare कैसे होता है? By maximizing his level of satisfaction. और producer का welfare कैसे होता है? By earning maximum profit. But how is it possible? By producing maximum output with a limited set of input, I can say. Is it clear, everybody? Acha. There are 3 important things, students. Yes, everybody? If really consumers thinks about the welfare, there has to be efficiency. 3 अलग-अलग efficiency आप लोग को यहाँ explain की गई है.
one is efficiency in production, one is efficiency in consumption, and one is said to be the overall economic efficiency, I can say. Is it clear everybody? सबसे जो पहला वाला है हम उसको बोलते हैं efficiency in production students. Yes everybody? अभी मैंने आपको अभी बोला कि प्रोड्यूसर का वेलफेयर कैसे होता है. Yes everybody? If a producer is able to produce maximum output with a limited set of input, लेकिन मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना है लिमिटेड सेट ऑफ इनपुट से, तो कैसे होगा? व्हेन ही इज एफिशिएंट इन प्रोडक्शन. यस एवरीबॉडी, व्हाट इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन? तो यहां लिखा है इट मींस इज प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स, आई वुड से, विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. मतलब इन शॉर्ट, इफ अ प्रोड्यूसर इज एबल टू प्रोड्यूस maximum output with the limited input or limited resources, I can say, by making optimum allocation of resources, by having maximum use of resources, I can say. Yes everybody, then only it is possible to produce maximum output with the limited resources, I can say. तो उसको basically हम लोग बोलते हैं efficiency in production. Is it clear everybody? Second वाला कौन सा है? Efficiency in consumption. Now how you can be efficient in terms of consumption, students, I can say. Yes everybody, it refers to distribution of goods and services to those consumers. Distribution of goods and services among those people. Yes everybody, that after consumption they are able to maximize the total satisfaction. Yes everybody, उसका मतलब क्या मालूम? ये मैंने पेन का प्रोडक्शन किया और पेन के प्रोडक्शन के बाद समझो कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, मतलब मैंने उसको बेचा. मुझे पेन सिर्फ बेचना नहीं है, मुझे ये भी ध्यान देना है कि बेचने के बाद मैं ऐसे लोगों को बेच रहा हूं, मैं ऐसे कंज्यूमर्स को बेच रहा हूं जिनको ये पेन की मैक्सिमम जरूरत हो, और जिनको पेन मिलने के बाद या पेन यूज करने के बाद उनको क्या मिले? इसका मतलब से मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिले. मतलब वी आर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स, आई कैन से, टू द पीपल हु नीड्स इट, टू द पीपल हु वांट्स इट, to the people who actually, I can say, can maximize their satisfaction from this particular commodity. Are you able to understand? Getting it? अगर एक प्यासे को आप पानी पिलाओगे ना, तो उसको जितना पानी का वैल्यू होगा, उसको जितना पानी का सेटिस्फैक्शन होगा, इस उतना किसी और को नहीं होगा. So you have to distribute the goods. आपको goods बेचना है, लेकिन ऐसे ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है. You have to distribute it such a way that after distribution, the consumer is able to maximize satisfaction to goods. Is it clear everybody? Alright? तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं efficiency in consumption students. Alright? और जो लास्ट है वो क्या है? Overall economic efficiency. When I talk about overall economic efficiency, उसका मतलब क्या? It means basically the production of those goods which are most desired by people. जो कंज्यूमर को चाहिए वही प्रोड्यूसर को बनाना चाहिए. जो कंज्यूमर डिजायर करता है वही प्रोड्यूसर को उनको देना चाहिए. दोनों खुश. अच्छा, कंज्यूमर को जो चाहिए था आपने उसको दे दिया तो उसका वन सेटिस्फाइड होगा, और प्रोड्यूसर ने वही बनाया तो उसका भी सब आउटपुट सेम हो जाएगा, तो उसको भी क्या मिलेगा? प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा. Getting it everybody? तो FES overall economic efficiency basically deals about, it talks about, I can say, you have to produce only those goods. You have to produce basically only those goods, I can say, which are actually desired by the consumers, I can say. जो कंज्यूमर डिजायर करता है, जो कंज्यूमर चाहता है, जो कंज्यूमर की नीड है, जो कंज्यूमर का वांट है, आपको उसी टाइप का प्रोडक्शन करना है और वही उसको बेचना है. Is it clear everybody? समझ में आया सब लोग को? So this is your first answer students. हम इसको बोलते हैं the content or scope of microeconomic cycles. Don't forget, if they ask you this answer even for a short note, ये चैप्टर में से सिर्फ short answers ही आने वाले हैं. Getting it? You have to draw the chart first of all, write the basic meaning of microeconomics, draw the chart in your examination paper, and then explain the points, I can say. Is it clear everybody? And as far as the weightage of this particular chapter is concerned, it is 7 marks compulsory, 10 marks with option. Getting it? 7 mark compulsory, 10 mark with option. तो 90% केस में हम expect कर सकते हैं कि yes, from the first chapter, yes, we can only expect short answers. So please don't forget to draw the chart, I can say, and then explain. This is your first answer, the content or the scope of microeconomics, I can say. Thank you so much.